Hello student, Hemant sir is here. So today we are going to start the solved problem of the area of a sector as well as length of an arc. Okay, area of a sector of a circle we will already discussed about the formula in our previous video. So today we are going to solve the solved problem of your textbook. Okay, so the first solved problem we have. The measure of a central angle of a circle is 150 degree. Okay, it is the circle. O is the center of a circle, and this angle, okay, it is the angle which is obtained by the two radius, which is of 150 degree, which is nothing but the value of theta. So theta equals to we have 150 degree. Then the radius of a circle is 21 centimeter. So the distance from center of the circle to its circumference is radius, and which is 21 centimeter, which is given. Then find the area of a sector. We have to calculate area of a sector and length of an arc. Okay. So we have the given part, which is theta equals to 150 degree. R, which is the radius of a circle, is 21 centimeter, and we know the value of pi, which is 22 divided by 7. Okay. So what we had to find? We had to find A, which is area of a sector, and length of an arc. So the formula for that, we have formula for area of a sector is theta divided by 360 into pi r square, and L, which is the length of an arc, equals to theta divided by 360 into 2 pi r. Okay. So now we are going to solve the problem. So first we are going to calculate area of a sector. So area of a sector, which is equals to A. So A equals to, formula we have theta divided by 360 into pi r square. So A equals to theta, we have theta equals to 150 degree. So here we have to write 150 degree divided by 360 degree. Okay, into pi, we have 22 divided by 7. So here we have to write 22 divided by 7 into r. R is 21. So r square means 21 square. So we can write here 21 into 21. Okay. So 0 and 0 will get cancelled. 7 and 21 will get cancelled by 3 times. So what we'll have? We have A equals to, see, it will also cancel 3 5s are and 3 12s are. So we will have 5 into 22 into 3 into 21 divided by, here we have 12. We have 12. So 3 1 is 3, 3 4s are 12, and 2 2s are 4, and 2 11s are 22. So we have area of a sector equals to 5 into 11 is 55 into 21 divided by 2. Okay. When we will multiply, we will get 577.5. So area of a sector equals to 577.5. It is area, so it will be centimeter square. Okay. So this is our first answer. Now we are going to solve or calculate the length of an arc. Now length of an arc. Length of an arc, and which is equals to L. So formula we have L equals to 2, it is theta divided by 360 into 2 pi r. So L equals to, what is theta? Theta is 150 degree. So here we have to write 150 divided by 360 into 2 into pi is 22 divided by 7 into r is 21. So 7 1 and 7 3s are 21. This will cancel by 180 times. So we will have L equals to 150 into 22 into 3
divide by 180. See, it will cancel again by 3 1 is 3 and 3 6 are 80, so it will become 60. Now 0 and 0 will get cancelled. So 3 2s are and 3 5s are 15. 2 1 is 2 and 2 11s are 22. So here we have 11 into 5, which is 55. So length of an arc will be 55 centimeter. Okay, so here we have the answer. So now we have both the answer, that means we have to write the result now. Okay, so the result will be, so what will be the result? The area of a sector, the area of a sector A equals to 577.5 centimeter square, and length of an arc equals to 55 centimeter. Okay, and it is our answer. Okay, बहुत ज्यादा इजी है, रॉकेट साइंस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. You have to just remember the formula, then you have to know how to apply the formula, and once you know how to apply the formula, you have to just put the value and get the answer. Okay, so it is really quite easy one. Okay, so on that basis we are going to solve the next problem. Okay, so write it down first. So now we are going to solve the second problem. Okay, so the second problem says, in a figure P is the center of a circle. Okay, so here the P is the center of a circle. That means the PQ and PB is the radius of circle. Then the radius of circle is given 6 centimeter. So here it is 6 centimeter is the radius of the circle. Segment QR is tangent to the circle at a point Q. Okay, so QR is the tangent over the point Q. That means this angle is of 90 degree. We know the tangent line to the circle, which is the perpendicular on the radius. Okay, that means this angle is the radius perpendicular. That means it is of 90 degree. Then if PR is 12 centimeter, okay, so this PR is 12 centimeter, it is given, then find the area of a shaded portion. So we have to identify the area of this shaded portion. Okay, so first we have to write the given part. So what is given? Radius of a circle is 6 centimeter. Distance of PR is 12 centimeter. So here we have to write 12 centimeter. Okay. Then what we have to find? We have to find area of shaded portion. Area of shaded portion. Okay. Area of shaded portion, which is equals to question mark that we have to find. Now formula. See here it is the right angled triangle PQR. Okay. So what we have to do? We have to identify first the area of triangle and then area of a sector. Then we will subtract area of a sector from the area of triangle. Then we will get the area of shaded portion. हम क्या करेंगे? पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. ओके, देन इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा. ओके, सो अब हमको एरिया निकालना है किसका? ट्राइंगल का. सो वी हैव टू कैलकुलेट क्यू आर ऑल्सो. ओके, क्यू आर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो फॉर्मूला हम लगाएंगे हाफ ट्राइंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? इट इज थीटा
डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, सो हमको थीटा में ये सेंट्रल एंगल भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो सॉल्यूशन. So we know, see, in triangle PQR, in triangle PQR, angle PQR is equals to 90 degree. क्या है? 90 degree. Why? Because the line या segment tangent to the circle is perpendicular on radius. ओके, दैट मीन्स जो एंगल ये है कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा. ओके, दैट मीन्स द एंगल PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल. देन वी हैव PQ equals to 6 and PR which is hypotenuse, PR equals to 12. See, ये जो साइड है हाइपोटेनस इससे डबल है. दैट मीन्स जब ये इसके हाफ होता है तो ये कब होता है? जब ये दोनों एंगल कितने के होंगे? 30 और 60 के होंगे. ओके, सो देयरफॉर हाइपोटेनस और the length of PR or PQ, length of PQ is equals to half of hypotenuse. ओके, therefore, और ये पॉसिबल कब है? बाय 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री से. ओके, सो किससे होगा ये? 90, 60 और 30 डिग्री थ्योरम से. ओके, देयरफॉर अब ये जो साइड है QR, ये हाइपोटेनस के √3/2 के बराबर होती है. देयरफॉर साइड QR इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. ओके, देयरफॉर QR इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कितना है? 12. सो हियर वी हैव टू राइट 12. सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6. देयरफॉर क्या हो जाएगा? QR इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और 6√3. ओके, ये सो नाउ वी हैव 6√3. अब हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइट भी है, सो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व ओवर हियर. ओके, क्योंकि हमको स्पेस बहुत ज्यादा लगने वाला है, सो हम यहीं पे सॉल्व करेंगे. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है? QR इंटू हाइट क्या है? PQ. Therefore area equals to half into PQ क्या है? 6√3. So 6√3 into हाइट क्या है? PQ is 6. So 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा. So 6 3s are 18. So एरिया क्या हो जाएगा? 18√3. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of triangle. If we will put the value of √3, then what is the value of √3? So A equals to 18 into √3 की वैल्यू होती है 1.73. कितनी होती है? 1.73. So अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? It will become about 31.14 सेंटीमीटर स्क्वायर.
Okay, so it is the area of triangle. Now we have to calculate area of a sector. Now area of sector, okay, which is A dash. Here it is A, so हमने उसको ले लिया A dash. Therefore A dash equals to क्या होता है? It is थीटा डिवाइड बाय 360. सी हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया था 60, 90, 60 एंड 30. सो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री का. ओके, तो सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60. देयरफॉर हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, यहां पर इस थ्योरम से so, क्या हो जाएगा? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो ए डैश इक्वल्स टू थीटा कितना है? 60. सो वी हैव टू राइट 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर. आर कितना है? 6. मीन्स 6 इंटू 6. सो 0 से 0 कैंसल, 6 आर 36. सो एक 6 से ये 6 कैंसल. सो क्या बच गया? ए डैश इक्वल्स टू पाई की वैल्यू इट इज 3.14 इंटू 6. सो मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए डैश इक्वल्स टू, if we will multiply, we will get about 18.84 centimeter square. So it is the area of sector. Okay, now अब हमको कैलकुलेट करना है शेडेड पोर्शन. सो ट्राइंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया. सो हियर वी टू राइट नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OBAQ, OBAQ. देयरफॉर क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया कितना अभी हमने कैलकुलेट किया? इट इज 31.14 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इज 18.84. इट इज 18.84. नाउ इफ वी विल सब्सट्रैक्ट 18.84 फ्रॉम 31.14, we will get 12.3. Okay, so yes, it is 12.30 something. Okay, so students, this is the way we have to calculate the area of shaded portion. Okay, थोड़ा conceptual है but है बहुत ज्यादा easy. Okay, so we have the answer, so we have to write the result now. Okay, so the result will be, so क्या हो जाएगा result? The area of shaded क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 12.30 centimeter square. Okay, it is the unit of area. Okay, and it is our answer. Okay, so this is the way we have to solve this problem. Okay, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट है बहुत ज्यादा इजी. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन. These questions are really very important to solve your practice set 7.4. Okay, so this is again, if you want to understand, you can keep repeat the video once. Okay, then you will get this question precisely. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय फॉर नाउ.